सामने जो आदमी खड़ा है ना उड़ीसा से बिलोंग कर रहा है। जगन्नाथ को छोड़ के उड़ीसा लोगों के पास कुछ परिचय आइडेंटिटी नहीं है। फिर से एक बार जय जगन्नाथ। थैंक यू। आप लोग को सुबह से जो आके सब जो स्पीकर आज सुबह से आज अभी तक फ्रॉम अर्ली टाइम ऑफ टुडे यू आर लिसनिंग मेनी मोर स्पीकर्स, am I right? बहुत सारे स्पीकर का आप सुन लिया। मैं आपको इतना धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग का धैर्य शक्ति को, आपका पेशेंस को। सो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सभी लोग को खुद के लिए एक जोरदार क्लैप लगा लीजिए, जोरदार क्लैप लगा लीजिए खुद के लिए। Before going to start my presentation, I pay my happiest and my gratitude to the dais persons and all the dignitaries who is sitting in front of the dais. So, my dear friends, you are spending more time, and the purpose is what? Purpose is something learning. Am I right? Purpose is learning something. जे मैं आज आया हूँ, खुद को टाइम दिया हूँ और इधर बैठा हूँ। एक अच्छा वातावरण, इधर एक एजुकेशनल एनवायरनमेंट है, एकेडमिशियंस आए हैं, तो बहुत सारे एकेडमिशियन जो थे प्रोफेसर लोग, उनके हिसाब से बहुत सारे बातें हैं करके सब लोग। लेकिन मेरा एक बात कहना है, आज जो डिस्कशन चल रहा है, ये डिस्कशन क्या है? ये होलिस्टिक अप्रोच नहीं है। मतलब एलोपैथिक साइंस क्या बोल रहा है फार्मेसी को लेके, होम्योपैथिक साइंस क्या बोल रहा है, यूनानी क्या बोल रहा है, अभी जो प्रोफेसर साहब बोल रहे थे टेम्परामेंट, ये जो जब हम होलिस्टिक अप्रोच ढंग से कोई डिस्कशन करेंगे तब हम कंपैरिजन लाएंगे तो हमारा साइंस क्या बोल रहा है। लेकिन मैं आज आपको बोलने वाला हूं जे इलेक्ट्रोहोमियोपैथी जो हम अभी जो फाइट कर रहे हैं, गवर्नमेंट के सामने हम जो प्रपोजल सबमिट किए हैं, आई एम ऑन द पार्ट ऑफ दैट प्रपोजल प्रिपरेशन। हम ये जो आपका जो आज का जो अरेंजमेंट का मेन हीरो है डॉक्टर मौर्या, गिव ए बिग हैंड फॉर डॉक्टर एपी मौर्या। कर रहा है सब कुछ पूरा, जैसे सर्वेंट से जो एग्जीक्यूटिव जो ऑफिसर जैसे ना सब काम एक अकेले एक आदमी कर रहा है। इसीलिए मैं आपको थोड़ा धन्यवाद दे रहा हूँ। तो मैं मेरा टॉपिक जो है ना स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग को ये जानकारी देना चाहता हूँ, जो प्रपोजल सबमिट हुआ है गवर्नमेंट के सामने, आईडीसी के सामने, जो प्रपोजल आईडीसी के सामने हम लोग सबमिट किए हैं, वो प्रपोजल क्या है, कंटेंट क्या है उसमें, और आईडीसी ने क्या सीकिंग किया था, क्या जरूरी था आईडीसी को क्या जानने के लिए, एक मेडिकल साइंस को रिकॉग्नाइज करने के लिए क्या जरूरी था, ये सब चीज हमारे पास है कि नहीं, और हम ये सब्जेक्ट के ऊपर क्या क्या डालें, क्या क्या टॉपिक के साथ हम प्रपोजल डालेंगे गवर्नमेंट के साथ। इसी हिसाब से कुछ स्पीकर मेरे से पहले ये टॉपिक को कवर करके चले गए। मैं थोड़ा थोड़ा करके सबको, आपको ज्यादा टाइम नहीं है, 700 पेजेस का प्रपोजल है, लेकिन मैं आपको 20 मिनट में थोड़ा इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। तो इसलिए मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे साथ सब मेरे को कोऑपरेट करेंगे। नेक्स्ट ये जो कंटेंट है ना प्रपोजल का, उसमें था जो पहला ये जो 8 नंबर वाला क्वेश्चन था आईडीसी का, आपका प्रीफेस होना चाहिए, इलेक्ट्रोहोमियोपैथी का ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रोहोमियोपैथी, इसके बारे में आपको बोलना चाहिए। You should give the explanation about the introduction and essential criteria, stages of development, what is research work covered by you, what research work is covered by your organization, next what institutions are run under which board and which councils, and what criteria is covering after why you are giving diploma or graduate certificates to your students or practitioners, how many number of experts in your country, then what research papers, what journals, what subject matters are published in different publications, तो कहाँ आपको प्रेजेंटेशन दिए हैं, इसी के ऊपर ये हमारा कंटेंट है। उसके बाद ऑफ मेडिसिन ऑफ मॉडर्न एरा, its resources is completely based on botanical kingdom and invented by Dr. Count Mattei in 1865 after studying all pre-prevailing system of medicine of 19th century in Europe. In his studies, Mattei came across various lacunas while treating the sick persons in pre-prevailing systems
after careful study for years together, Mattei in 1865 introduced new revolutionary system of therapeutics to overcome those lacunas to the maximum extent, to give relief or cure to the sick persons by simple natural way of healing. This is we are introducing our system in this way. Electro-homeopathy believes in etiology of the diseases found in the weak constitution of the patient. There are three basic causes of disease. Either the root of the disease hide into blood, lymph or both respectively. It is easy to diagnose also. If the patient belongs to the sanguine constitution, then the roots of disease lies in blood. If patients have lymphatic constitution, then the root of disease lies in lymph. And if the patient belongs to mixed constitution, then the root of disease lies in both. So there are also three main remedies at first instance to eradicate the root cause of the disease. There are anti-lymphatic, anti-angiogenic and anti-cancerous. Origin and history of electro-homeopathy. No doubt Dr. Count Mattei of Bologna, Italy is credited to be the founder of electro-homeopathy, but some so-called Mattei followers like Karl Friedrich Zimpel, Italy, Theodor Kraus, Germany, made remarkable advancement in electro-homeopathy. Besides Dr. A. Sutter, Geneva, Switzerland, Dr. Pongio, Paris, France, and Father Augustus Muller, Kankanadi, Mangalore, India, established their own methodology in the name of electro-homeopathy. Alexander von Bundas also introduced his electro-homeopathic spagyrics under Salmona laboratories amongst all others. Other का जो laboratories थे उसके अंदर उसमें से एक है Salmona laboratory जो एक renowned laboratory है जहाँ से पूरा globally electro-homeopathic medicine imported हो रहा था. तो अभी next मनोज next criteria. Any system of medicine is required to fulfill the specific criteria to be an independent system of medicines. Electro-homeopathy by fulfill extent this criteria as follow. एक question mark आ रहा है. Electro-homeopathy is fulfills all the criteria to getting as recognition as a full medical science. As a full medical science, these are the criteria. It must be fulfilled by any medical science for recognition. So, the electro-homeopathy has its own principle which logically explains concept of health, disease and therapeutics. The system has its own way of diagnosis and to know the root cause of sickness. The system has the medicines for both internal and external application to manage the diagnosed sickness as per its law of dosology. The system has its own unique spagyric-based pharmacy to prepare the drugs, which is already the part of GHP, German homeopathic pharmacy. Diagnostic and therapeutic system is safe from human health point of view. Safety of the therapeutic agents as regards to toxic effects on health of human beings. Broad-based clinical data is available to ascertain the therapeutic value of the system, which is recognized by the various research papers and pre-clinical studies. Next, concept of health. In electro-homeopathy, health depends upon the normal condition of the blood and lymph. According to different theory, different medical science, they are claimed that the meaning of health, the definition of health. According to electro-homeopathic ethics, we believe that the electro-homeopathic health depends upon the normal condition of blood and lymph, and disease is produced from its abnormal state. So health is the chemical equilibrium between waste and supply. Waste and पहले से जब कुछ समय पहले डॉक्टर कमलाकांत नायक जी जैसे बोल रहे थे कि हमको क्या चाहिए, हम क्या लेते हैं, क्या निकलते हैं सर, इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वेस्ट एंड ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट इन इलेक्ट्रोपैथी, व्हाट ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट इलेक्ट्रोपैथी में ट्रीटमेंट में क्या हम देते हैं. ट्रीटमेंट में इन इलेक्ट्रोपैथी द मैनेजमेंट ऑफ सिकनेस इज वेरी इजी.
we need the following line of treatment to treat the sickness as per the diagnosis. Electro-homeopathy medicines are divided into 3 groups and 9 series. The management of sickness is very easy. We need the following line of treatment to treat the sickness as per the diagnosis. Electro-homeopathy medicines are divided into 3 groups and 9 series. There are 3 groups. What are they? Principal, special and general. 9 series like Profoloso, Anxietico, Lymphatico, Canceroso, Vermifugo, Venerio, Febrifugo, Pectoral and Electricity. The principal group remedies are used for particular vitiation and special remedies are used for organic dysfunction and the general remedies are used for support to both principal and special remedies for enhancing its activity. Electro-homeopathy medicines are applied in both forms, both as externally and internally. Doses are applied on basis of disease. We consider the 4 phases of disease like acute, subacute, chronic and degenerative. Next, pharmacy. जो today's discussion जो चल रहा है ना, स्पेशल सब्जेक्ट जो फार्मेसी है ना, ये फार्मेसी के टॉपिक ऊपर आज का जो डिस्कशन था. Electro-homeopathy has specific pharmaceutical method called coagulation and its final product is called spagyric essence. In this way, these original substances are separated from raw materials or crude materials using alchemical techniques and the substances gained in this way are specially prepared and recombined. Next, curriculum. But subjects are followed our students are doctors. Our institute. Electro-homeopathy has its own philosophy, pharmacy, materia medica, practice of medicines and iridology with allied subjects like anatomy, physiology, surgery, pathology, gynecology, pediatric, ENT, medical jurisprudence and toxicology. Next is electro-homeopathy development in India context. Indian context में electro-homeopathy का development कैसे हुआ है? Electro-homeopathy made its way to India via England and the first institution in Bengal, Electric Medical School to offer training in the science with the affiliation Maurya Ventroli Mary in adopted son of Dr. Count Mattei. आप लोग को पता है सारा भारत में पहला इंस्टीट्यूशन बंगाल में था. ये बात आपको पता था? उसका नाम था क्या? बंगाल इलेक्ट्रिक मेडिकल स्कूल. नेक्स्ट, Dr. H.D. Banerjee of 14 Khansama Lane, Kolkata in 1893 published his first book and that book was published from Italy. Italy से book प्रिंट होके आया था और पब्लिश उधर हुआ था, इंडिया में नहीं था. डॉक्टर बिपिन बिहारी वास्तव्याल of Kolkata published his monumental work Materia Medica of Electro-homeopathy in Bengali language in 1909. In 1909, Dr. H.D. Banerjee published his book Lectures on Materia Medica, which was published from Italy. The first journal named Essentia published about electro-homeopathy in 1981. Article written by Dr. Father Augustus Muller of Mangalore. Dr. N.L. Sinha, who learned the system from the Institute of Applied Medical Science, London, in 1911. He established Electro-Homeopathic Institution in 1911 at Sitapur, Uttar Pradesh. Later in 1920, he established the National University of Electro-Complex Homeopathy in Kanpur. In this slow and steady way program of Electro-Homeopathic system of medicine in India, suddenly converted into rapid mode in the 19th century, and almost hundreds of institutions started at every state of India were running diploma and graduate course, affiliating under different councils and boards, and registered under Public and Charitable Society Act 1860. Lakhs of students, practitioners have become more popular through their good recovery ratio of disease-stricken people
then the other prevailing system are raising their voice against electro-homeopathy. Then this is the struggling period of electro-homeopathy, when some organizations of the established system of medicine started rising about the existence of electro-homeopathy system of medicines. After a long time judicial exercise, Supreme Court of India gave the relief to electro-homeopathy practitioners, and the central government health department also issued the notification to no ban the practice, education and development of electro-homeopathy until central legislation is brought by the government of India. Now in India, two states like Chhattisgarh and Rajasthan has already accepted the system of electro-homeopathy through their electro-homeopathic recognition bills 2002 and 2018 respectively in their assembly. We also from other states are united to raise our voice before the government to recognize these new scientific trends of electro-homeopathy at the earliest. I hope with the core strength and support from our experts, students and organizations, we are going to be success very soon. So my dear friends, this was the just overview of our proposal paper. प्रपोजल पेपर में क्या क्या था, उससे मैं क्या डिलीट किया हूँ, जो रिसर्च पेपर्स है, जो मेडिसिन को हम कहाँ कौन सा लैबोरेटरी में, जैसे हमारा उड़ीसा का एक एस्टैब्लिश्ड लैबोरेटरी ऑर्गेनाइजेशन यूनिवर्सिटी है, शिक्षा एंड अनुसंधान यूनिवर्सिटी। तो शिक्षा एंड अनुसंधान यूनिवर्सिटी से बहुत सारा पेपर को हम तैयार करके आईडीसी के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और जैसे भारतवर्ष में आपको मालूम होगा एक बायो पार्क है, लखनऊ बायो पार्क, उधर हम लोग तो पूरा कैंप डाल के उधर अजीत सिंह, डॉक्टर मौर्या, डॉक्टर कमलाकांत नायक और मैं और दूसरे दो हमारे साथ डॉक्टर पंडित थे, डॉक्टर श्रीवास्तव थे। तो ये सब लोग मिलके उधर हम पूरा कैंप डाल के 1 महीना 2 महीना उधर से बहुत सारे पेपर, रिसर्च पेपर कलेक्ट करके हमने आईडीसी के पास सबमिट किए। तो ऐसे और पहले से भी जैसे एनईएचएम और दूसरा बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जो है बहुत सारे काम किया है, वो उन लोग का भी सपोर्ट था। तो इसलिए हम लोग अभी जो आप लोग के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है, जे राजस्थान में हो गया और छत्तीसगढ़ में हो गया था, अभी पेंडिंग है और हमारा स्टेट में कब होगा, सब लोग का जानकारी के लिए उत्सुकता है। मैं आपके एक पॉइंट बात बता रहा हूँ। आज एक काम के लिए आप आपको खुद का छाती के ऊपर आपके पूरा हाथ रख के बोलिए, आज जो का ऑर्गेनाइजेशन आज हुआ है कोलकाता में, जितना लोग आप इकट्ठा हुए हैं उससे हाथ देखिए, तो हाथ खड़ा कीजिए। कितना लोग प्यार से इलेक्ट्रो-होमेओपैथी से प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्यार से इलेक्ट्रो-होमेओपैथी पढ़ रहे हैं, प्यार से इलेक्ट्रो-होमेओपैथी को रिकॉग्निशन के लिए सोच रहे हैं। तो मौर्य जी के साथ कल कितना थे, कल रात को कितना आदमी मौर्य जी के साथ थे ये ऑर्गेनाइजेशन को सफल करने के लिए? किसी का हाथ शायद कम आदमी का होगा। है आप लोग सब? थैंक यू, गिव ए बिग हैंड फॉर योरसेल्फ। थैंक यू। माय डियर फ्रेंड्स, सबको मिलना होगा, सबको मिलजुल के प्रयास करने से हम दमदार कैसे हमारा एजिटेशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे, गवर्नमेंट के सामने कैसे हम पूरा दमदार के साथ अपना स्टेट के गवर्नमेंट के सामने हमारा प्रेजेंटेशन कैसे अच्छा रहेगा। और जो लकुनाज है, हमारा स्टेट आपके बगल में है, आप भाई है, उड़िया और बंगाली भाई है। तो हम अगले हर साल 21 जनवरी को उड़ीसा में प्रोग्राम बनाते हैं, हर साल 21 जनवरी हमारा फिक्स है। आज मैं ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट हिसाब से, उड़ीसा ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट हिसाब से आप सभी लोगों को निमंत्रण करके जा रहा हूं, आप सभी को उधर पधारने के लिए निमंत्रण कर रहा हूं। 21 जनवरी को सब लोग आप उड़ीसा आइए और उड़ीसा के जो मिनिस्टर आएंगे, जो चीफ मिनिस्टर आएंगे, जितना भी लोग आएंगे, हम उनके सामने पूरा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंटेशन रखेंगे। और कलकत्ता में कभी भी किसी के सामने जाना होगा, पूरा